Hi everyone. So today we are going to do a task 1 that's about the table shows population in 2010 and projection is about 2100. Okay. So these are the population in 2010 and this will be the population in 100 projection ਦੇ ਵਿੱਚ. Okay. So top 10 countries ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ highly populated ਨੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ position ਦੇ according and to 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ population ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ according. Okay. So first moving to the introduction, paraphrasing the table, simple the tables show population in 2010 and to 100 but ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ paraphrase ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਕਰਾਂਗੇ. The table, the tabular representation elucidates any word the population or number of citizens. जब population लिख लो या number of citizens लिख लो, ठीक है. कि elucidate कर रहा है population और number of citizens in top 10 populated nations. Top 10 जड़ियाँ populated nations ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ population in 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ and projected or estimated year to 100. Okay, 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੀ and projected years projected ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ in to 100 ਦੇ ਵਿੱਚ. Okay, so overall first overall will be about China and India. China was highly populated country in 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ China ਕੀ ਆ highly populated country ਆ first position ਤੇ ਹੈ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ. China was a highly populated nation. However, there will be a significant shuffling of position by India. Shuffling mean shuffle change हो जाएगी position कदों in projected time period ਦੇ ਵਿੱਚ there will be a significant shuffling of position by India. India ਦੇ according ਕੀ ਹੈ India ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ position shuffle ਹੋ ਜਾਏਗੀ in to 100 projection years ਦੇ ਵਿੱਚ. Okay, so India will become a highly populated nation in to 100. Okay, 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ China was highly populated but there will be a significant shuffling होएगी. So shuffling ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ India ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ shuffling होएगी by India ਦੇ ਨਾਲ and India will become a highly populated nation in to 100. Okay. Second overall point, except from China and Brazil, China and Brazil ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਭ countries ਦੇ all other countries will show an inclining trend. ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ countries ਆ ਉਹ ਕੀ show ਕਰਨਗੀਆਂ inclining trend. China ਤੇ Brazil ਦੋਨਾਂ ਦੀ population ਕੀ ਹੈ ਘਟੇਗੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਵਧੇਗੀ. Okay, except from China and Brazil all other nation will show an inclining trend. बाकी की show करेंगे inclining trend mean ਉਹਨਾਂ ਦੀ population की होएगी increase होएगी. Okay, clear? So these are the overall points which you can write in this task. Okay. Okay, moving to the body paragraphs. Okay, looking into the details. First BP ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ start ਕਰ ਸਕਦੇ China and India ਤੋਂ. Okay, in 2010 China had highest population with 1341 million and India was at a second position. 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ China had highest population ਸੀ with 1341 million ਦੇ ਨਾਲ and India was at second position ਤੇ ਸੀ with 1225 million. Okay, however in to 100 it is projected, it is estimated, it is speculated that कि projected कितना गया है that India will increase to have a highest position in to 100. India ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ highest position ਹੋਏਗੀ in to 100 ਦੇ ਵਿੱਚ and China was on second. China second ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ with 941 million population. Okay, so it is projected to increase its population to 1551 million in to 100 and China was on second position at 941 million. Okay, clear? Then again USA. So USA ਦੀ population भी की है increase हो रही है
3110 है 310 है इन 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ, बट इन 2100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੀ 478 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਟੇਬਲ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 3rd ਪਲੇਸ ਤੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਏਗਾ 4th ਪਲੇਸ ਤੇ। population the population of USA will increase in projected year, but it will move down to 1 place, ठीक है। so 3rd place तो किथे आ जाएगा 4th place ते, okay, it will move down to 3rd place to 4th place, okay, and being overtaken by ਇਹਦੀ प्लेस ਨੂੰ कौन overtake कर लेगा, being overtaken by नाइजीरिया, okay, so नाइजीरिया ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਹੈ overtake हो जाएगा with 730 million population, ठीक है। so being overtaken by Nigeria which will जेड़ा किथों मूव करेगा from 7th place to 3rd place। नाइजीरिया दी population किथों मूव करेगी 7th place आ 2010 दे विच will move to 3rd place ते, okay। फर्स्ट यूएसए ਨੂੰ ओवरटेक करेगा, ओवरटेक करके being overtaken by Nigeria which will move from 7th place to 3rd place with 730 million population, okay। next about Brazil और Indonesia। so Indonesia ਦਾ just 4th position ਤੇ है, ਇਹਦੀ भी population increase होएगी but माइनर इंक्रीज आएगा, बहुत नहीं, 240 है 254 मिलियन तक इंक्रीज आएगा, जस्ट 14 मिलियन का इंक्रीज बहुता नहीं आएगा, ठीक है। सो ये मूव हो जाएगी 4th पोजीशन तो 7th पोजीशन पे, ओके, 4th प्लेस टू 7th प्लेस मूव कर जाएगी। ब्राज़ील है जस्ट 5th पोजीशन पे है, सो यदी पॉपुलेशन भी डिक्रीज होएगी तो यदी पोजीशन भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, 10th प्लेस आ जाएगी फ्रॉम 5th place to 10th place, okay। Brazil will move down from 5th place to 10th place with 177 million population, okay। again Pakistan, so Pakistan दी just position same ही रहेगी, 6th position है 6th ही रहेगा, ठीक है। विद इंक्रीज आएगा population दे विच, but 6 है तो 6th place ते ही रहेगा। एंड नाइजीरिया हो गया। सो जड़ियाँ लास्ट 3 कंट्रीज़ ने अपने को टेबल दे विच, लास्ट 3 कंट्रीज़ वो रिप्लेसड हो जाएंगियाँ, ओके। वो बांग्लादेश, रशिया, जापान और किहदे नाल रिप्लेस होणगियाँ 3 न्यू कंट्रीज़ दे नाल, ओके। सो ये कंट्रीज़ 2100 दे विच एलिमिनेट हो जाएंगियाँ। जो लास्ट 3 कंट्रीज़ आ बांग्लादेश, रशिया एंड जापान विल एलिमिनेट फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम द टेबल चो टॉप 10 टेबल चो ये कंट्रीज़ एलिमिनेट हो जाएंगियाँ एंड दीज कंट्रीज़ विल बी रिप्लेसड बाय 3 न्यू कंट्रीज़। 3 न्यू कंट्रीज़ दे नाल रिप्लेस होणगियाँ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिलीपींस एंड टैंजानिया, ओके। सो ये कंट्रीज़ दे नाल एक ही है रिप्लेसड हो जाएंगियाँ, सुपरसीडेड, ओके, सुपरसीडेड, रिप्लेसड, सरमाउंटेड बाय 3 न्यू कंट्रीज़, ओके। सो लास्ट 3 कंट्रीज़ विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द table, okay, clear, okay। So this is the today's task 1, okay, thank you।